Welcome to ASME classes. So today we'll be discussing about a recruitment which has been recently published by National Fertilizers Limited for management training, and this recruitment is for around 164 posts. This is a Navratna company. Okay, so this is for most of the branches for freshers. So let's begin with our recruitment. So National Fertilizer Limited is a Navratna premier profit-making central public sector undertaking engaged in manufacturing and marketing of fertilizers and other agriculture inputs. Okay, उसका plants कहाँ है? So NFL has 5 gas-based ammonia urea plant in Punjab, Haryana, Bijapur in Madhya Pradesh. So इसका plant कहाँ है? पंजाब में है, हरियाणा में है और बीजापुर इन डिस्ट्रिक्ट बुरान मध्य प्रदेश. So ये रिक्रूटमेंट क्या लेके आया है? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए. मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिक्रूटमेंट लेके आया. बहुत सारा ब्रांचेस इसमें है, जैसे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले में अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल लैब, सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी है इसमें रिक्रूटमेंट. फायर एंड सेफ्टी में अगर कोई बीटेक एमटेक किया है तो उसके लिए भी है. आईटी के लिए भी है, मटेरियल्स के लिए भी है. ओके, और एचआर. ओके, सो ऑलमोस्ट ऑल द कोर ब्रांचेस आर कवर्ड इन दिस रिक्रूटमेंट. सो इनका पे स्केल कितना है? 40,000 to 1,40,000. सो दीज आर द रेस्पेक्टिव वैकेंसीज. इंस्ट्रूमेंटेशन में 17, केमिकल लैब में 12, वैसे सिविल में 3, फायर एंड सेफ्टी में 5, मैकेनिकल we have 18, chemical in 56. Though it is a fertilizer company, so we are having most of the recruitment in chemical engineering. So accordingly, you can see, so the pay scale is 40,000 to 1,40,000, and the number of posts is